Question answers we will discuss. Choose the correct answer. Sound can travel through all, है ना? Solid, liquid and gases. Three types के जो तीनों medium में से sound can travel. Voice of which of the following is likely to have a minimum frequency? Baby, boy, man, and a woman. गर्ल की फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं वही तो बोल रही हूँ। Girls and babies are having a high frequency. Man. In the following statement, मतलब P and true and false are there. Sound cannot travel in vacuum. True. The number of oscillations per second of a vibrating object is called time period. If the amplitude of the vibration is large, sound is feeble. False. अगर amplitude strong है, तो sound feeble. Feeble मतलब slow. Feeble नहीं होगी. अगर amplitude strong high है, तो loudness भी क्या होगी? ज़्यादा. Because these are the directly proportional to. Okay. For human ear, the audible range is 20 hertz to 20,000 hertz. True. The lower the frequency of vibration, the higher is the pitch. False. Unwanted or unpleasant sound is termed as music. False. What is called? Noise. Noise pollution may cause partial hearing impairment. True. Blanks and time taken by an object to complete one oscillation is called time period. क्या? Time period. Loudness is determined by its dash of vibration. Amplitude. Amplitude of vibration. Unit of frequency is hertz. Unwanted sound is called Noise. Shrillness of sound is determined by the pitch या frequency या pitch of the wave. ठीक है? Now the numerical is there. A pendulum oscillates 40 times in 4 seconds. Find the time period. ठीक है? आपको क्या given है? Number of oscillation. ये आपने कॉपी में भी करना है. 5th question. Number of oscillations कितना given है आपको? Number of oscillation 40 times. And time कितना given है? 4 seconds. ठीक है जी? Now, what they are saying to calculate time period and frequency. How we will calculate? Oscillation by time. Time period कैसे निकाल सकते हैं? Oscillation by time. Oscillation by time. Any idea? Time by oscillation. Time period is वन बाय 10 क्या आ गया? सेकेंड, दैट इज 0.1 हो सकता है यहाँ. 1 by 10. Now the next is frequency. What is frequency? Number of oscillations divided by time. Frequency हमारे पास number of oscillations. Number of oscillations divided by time. That is number of oscillations 40. Time is 4. Answer is 10 hertz. हम इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं. यहाँ पे मैं टाइम पीरियड को निकालने के लिए I can also use this formula. Time period is equal to 1 upon frequency. ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लो. ठीक है? दैट इज 10 आ जाएगा आपके पास 10 हर्ट्ज. उसके बाद हम सीधा लिख सकते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. 1 अपॉन 10 दैट इज 0.1.
ठीक है, ये आप दोनों तरह से निकाल सकते हो। क्या जो फ्रीक्वेंसी आपने डेफिनेशन लिखी थी ना फ्रीक्वेंसी की, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, यही करा था, वही फार्मूला अप्लाई करा। 10 हर्ट्ज इज आंसर। टाइम पीरियड कैलकुलेट करना, दैट इज द वन अपॉन फ्रीक्वेंसी। यू कैन आल्सो डू दैट। और अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो हम उसको उल्टा कर देते हैं, ये फार्मूला नहीं करना, तो यू कैन डू दिस फार्मूला। टाइम पीरियड कितना होती है 1 अपॉन द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लिखोगे एंड यू कैन फाइंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या लिखी थी हमने, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय द टाइम करते हैं, तो हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज टाइम पीरियड, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the sound from a mosquito is produced when it vibrates its wings at an average of 500 vibrations per second. What is the time period? क्या करेंगे हम, अब उन्होंने टाइम पीरियड कितना दिया, मतलब वन को करा हुआ है कि टाइम पीरियड इज डिफाइन कितना करने को, ऑसिलेशन कितनी गिवन है, 500 वाइब्रेशंस गिवन है ना, तो वाइब्रेशंस क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस हो गया, यानी कि वाइब्रेशंस गिवन है तो 500 फ्रीक्वेंसी दैट इज 500 हर्ट्ज हो गया। ठीक है, तो ये मैं इरेज कर दूं, ये इरेज कर, ये सबका हो गया, राइट। नाउ द सिक्स्थ न्यूमेरिकल you also have to do it on your notebook also. But they had given the oscillation frequency (500 hertz). They had given. How we will calculate the time period? What is the formula? 1 upon frequency. What is the answer? 0.002 seconds. ऐसे आएगा ना, यही आएगा। ठीक है, क्लियर बेटो, आपको कोई डाउट है? What is frequency? Number of oscillation upon time. What is time period? 1 upon frequency. ये ज्यादा इजी है, राइट बच्चे? राइट बेटा, फार्मूला से दूर होना चाहिए, यूनिट से दूर होना चाहिए। ठीक है, we can give this numerical in exam also in 2 marks or 3 marks. But obviously clock oscillation का तो वही आएगा। ये टर्म वैल्यूज चेंज हो सकती है, न्यूमेरिक वैल्यूज में भी चेंज, but the formula it will remain the same as. The next question is, identify the part which vibrate to produce sound in the following instrument. ढोलक में पार्ट हमें बताना है, ढोलक में कौन सा पार्ट उसका जो है साउंड प्रोड्यूस करता है। रबर का मटेरियल होता है, उसको क्या करेंगे ना, हमको ही देखते हैं। रबर मटेरियल, रबर नहीं होता, ढोलक मटेरियल। ये एक मिनट, सितार में स्ट्रिंग्स, ठीक है, फ्लूट में होल्स, ठीक है। Now what is the difference between noise and music? Already discussed. Any doubt in that question? Any doubt in that question? Noise and music का difference? Oh, I will tell you. और फ्लूट में होल्स, Holes. वही बोला। नहीं, 5th and 6th you will do, 7th you will not do, 8th you will do. What is the difference between noise and music? Everyone knows the answer. ठीक है, noise क्या है? It produces a unpleasant effect on the ear.
Why so? The whole lecture. It produces definitely beta. It produces unpleasant effect on our ear and our mind, and on the other side, but we will write down pleasant effect. Non-periodic vibrations. Here are the periodic or the regular waveform, irregular waveform, and music में regular. It noise में it produces a health hazard. Long exposure to the music noise will causes the serious health hazards or the problems, whereas in the music it will does not cause any health hazards. List the sources of the noise pollution in your surrounding. क्या क्या है? You can write down. We will not write down in the notebook. क्या क्या है आपकी surrounding में noise pollution के? Traffic, loudspeaker, ठीक है, phones, ठीक है, silencers नहीं है, ठीक है, bullets, right, firecrackers, all these are the factories, ठीक है, these causes the. Explain in what ways noise pollution is harmful to the humans. किस वे में है? We already discussed ना harmful effect क्या क्या है? Sleep, ठीक है, और nervous tension, stress, headache, hearing problem, high blood pressure, depression. No, we are writing what are the effects. Insomnia एक नींद ना आना ना, तो hypertension, hearing loss, stress, earache, headache, all these are the. Then your parents are going to buy a house. They have been offered one on the roadside and other on the 3 lanes away from the roadside. Which house you would suggest your parents explain? Which you will suggest? But obvious 3 lanes away. Why we will prefer the 3 lanes away? Because that is away from the noise. We will write down. It is better to purchase a house which is 3 lanes away from the main road. Why would we prefer? Because the noise pollution, we can avoid the noise pollution. Okay, distance ज़्यादा हो जाएगा. As the distance between the source and the listener increases, ठीक है, तो जो है intensity of the noise is also decreases. We can write down. लिख सकते हैं. Next question है sketch the larynx and explain its function in your own words. Larynx आता है सबको? बना लेंगे. कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम? Are we able to do it? Then lightning and thunder takes place. Function में sound produce करना as the air pass from it. हाँ, we already discussed. Lightning and thunder takes place in the sky at the same time, at the same distance. Lightning is seen earlier and thunder is heard later. Can you explain why? We already discussed. What is the speed of light is? What is the speed of light? 3 into 10 is by 8 meter per second. And what is the speed of sound? 340 meter per second. The speed of sound जो है that is less as compared to the speed of the light. So we can hear lightning is seen first as compared to the. Any other doubt? Diagram of human ear वो आपने बनाना. Diagram of human ear means आपके questions करने हैं. एक आपने करना है 5, 6, 8, 10, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13. And after that the ear of that. Diagram of an ear. Vocal cord आएगा ना, बीच में क्वेश्चन ही है. Larynx like that में वो है कहाँ उन्होंने sketch the larynx ना. So when they are saying sketch the, that's why 2 diagrams of the larynx as well as the human ear, and the rest of the questions I told you. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions are there. Okay, are we able to complete it? हाँ जी. इसके नीचे name लिखो.